Assalamu alaikum beta and namaste. I'm sure you're fine. Once again same text, that is Pakistan Zindabad, and second part of this text where we are studying that is generally called two nation theory. Why Pakistan was created, and this portion, this session discuss the reasons behind the creation of Pakistan. You may not agree with these reasons, but these reasons we are told historically. And we studied that during Second World War, all the Congress leadership was in jail, and that was no doubt turning point for Pakistan, turning point for Qaeda Muhammad Ali Jinnah as well. But he got space. He visited different places. He gathered. He met different people, and finally he tried to find out a way for Pakistan. So it is said that if Gandhi had been out, Pakistan would have not been created. This is how people say. And we also have said that we should be thankful to Second World War. English left us, gave us independence. They left India. Of course, Gandhi could create a lot of pressure. We cannot deny that. I'm not talking about Jinnah. As I said earlier, that Muslim League was founded by English people, to disturb Congress, to disturb Gandhi basically. So we must be thankful to Second World War. The English left India because of Second World War. They had to face Hitler. Anyways, so we will read the paragraphs. And the paragraph is, throughout the war years, he was a very sick man. Sick is adjective here. But he refused to take his doctor's advice. I hope that you know the difference between word advice and advise. Word is advice, and another word you will find that is advise. These both words can be used as a verb. An advice word also can be used as a noun as well. But here students can make mistake. That is, if I write the doctor advised me, you can safely replace this word advise with the advice where the spelling is CED. But if you write in this way, the sentence will be considered wrong. That is, he gave me an advice. Here word advice has been used as a noun, though this is a noun, not noun. See, I have written as a verb, not a noun. So if you write advise here with SE, it will be considered wrong. You will replace this word with advice, then the sentence will be correct. Advice. So I hope that now the difference between advice and advise is clear. Let's go. Advice to take rest. I have work to do, he would always say. Gandhi and Jinnah met for 3 weeks of talks in last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be two nations, not one. Gandhi replied that this would mean ruin for all India. Word ruin means destruction. So if you divide India, it would be destruction of whole India. This was the opinion of Mr. Gandhi. Means ruin for all India. There could be no agreement between two men so different. Now you will understand here the difference. हाँ जी कोई डिफरेंस हिते ॿुधायो वियो आहे उहो ॾाढो खिल जोॻो डिफरेंस आहे. ठीकु आहे, डिफरेंस इहो ॿुधाइण जी कोशिशि थी कई वञे
त गांधी धोती पाईंदो हो ऐं जिना 3-piece सूट पाईंदो हो, उन जे करे ॿई हिकु जहिड़ा नथा बीह सघनि। ॿई एक्सट्रीमली रिलीजियस हुआ अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट। यानी गांधी जी हिते इंसल्ट करण जी कोशिशि कई वई आहे, इहो ॿुधाए करे त गांधी धोती पाईंदो। पर आउं सम्झां थो कपिड़ा त तयन कोन था कनि, कपिड़ा तयन कनि माण्हू जे किरदार जो, या माण्हू जे किरदार जो उनजो शहूर या हुनजी स्ट्रगल या हुनजो अमल तय करे। मुंहिंजे ख़्याल में अमल वधीक अहम आहे। गांधी सादा कपिड़ा छो पियो पाए, ख़ाली धोती छो पियो पाए? छाकाणि त हू कंहिं तरीक़े सां इकनॉमिकली धकु हणणु पियो चाहे अंग्रेज़ खे। अंग्रेज़नि जा ठहियल फैक्ट्री में ठहियल कपिड़ा न ख़रीद कयो, छाकाणि त गांधी अंग्रेज़ खे नुक़सानु पहुचाइण में कामयाबु ई तॾहिं वियो हो जॾहिं हुन इकनॉमिकली धकु हयो उन्हनि खे। ठीकु आहे, कपिड़ा न आहिनि वठिणा, लूणु न आहे वठिणो, हीअ शइ न आहे वठिणी, पंहिंजो कपिड़ो पाण ठाहिणो आहे, फैक्ट्री मां कपिड़ो न आहे वठिणो। इहा नक में नाकेली वांगुरु साबित थी अंग्रेज़ लाइ गांधी जी इहा मूवमेंट। उन जे करे तव्हां खे इंडिया जे झंडे में चरखो नज़र अचे थो त गांधी चयो गो बैक टू नेचर। उहा अलॻि ॻाल्हि आहे त इहो पॉसिबल ई कोन्हे न, वरी हो त हू वापसि जेको सो जे होम मेड फैक्ट्रीज़ ॾांहुं वञनि, जेके शयूं घरनि में ठहनि उन्हनि ॾांहुं वापसि वञनि, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उन वक़्तु बहरहाल गांधी इहो करे अंग्रेज़ खे डैमेज करण में कामयाबु बहरहाल ज़रूरु वियो। हिते तव्हांखे जेको डिफरेंस ॿुधायो पियो वञे त धोती पाईंदो इहो खिल जोॻो आहे, यानी इहो कोशिशि इहा कई पई वञे त गांधी जी इंसल्ट कई वञे। जिना नो डाउट ही वॉज अ रेस्पेक्टेड मैन, वाई वी शुड इंसल्ट गांधी on the basis that he was a Hindu? It's not justified. Well, so there could be no agreement between two men so different. Jinnah was a usual very severe and firm, faultlessly dressed. यानी जिन्ना जा जेके कपिड़ा पातल आहे उन्हनि में को फॉल्ट ई कोन हूंदो। माना ही सॼो ॾींहुं गांधी जी धोती मां पिया ॾिसंदा, अजीब खिल जी ॻाल्हि आहे। Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on floor. माण्हू जी सादगी खे नोट करणु घुरिजे, तोड़े जो मूंखे गांधी सां खोड़ सारा इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइ ते आहिनि। The one was a Muslim first and lost, the other Hindu to his fingertips. त पोइ ॿिन्ही में फ़र्क़ु कहिड़ो रहियो? Jinnah might have said, look at the sentences structure, might have said. We have studied modal verbs, we will study modal verbs, might have then main verb third form. Here, doubt past is expressed. Jinnah might have said then what he once said of Hindus and Muslims, I quote, "We are different creatures. There's nothing in life that joins us together." असां मुख़्तलिफ़ अलॻि मख़लूक आहियूं, असांजे विच में अहिड़ी का बि शइ कान्हे जेका असांखे गॾे रखे, जेका असांखे जॉइन करे रखे। टोटली कंट्राडिक्टरी सेंटेंस। तव्हां 1947 धारे या 40, 42, 43 धारे इहा ॻाल्हि पिया कयो। मुस्लमान ऐं हिंदू त सदियुनि खां रहिया पिया इंडिया में। इहो कंट्राडिक्शन पहिरियां ज़ाहिर छो न थियो? इहो होश हिननि खे पहिरियां छो न आयो त असां ॿ अलॻि मख़लूक हुयूं? या अंग्रेज़ जी चालाकी हुई त कंहिं तरीक़े सां ॿिनि पार्टियुनि खे विढ़ाए करे कमज़ोर कयो वञे हिननि खे। अंग्रेज़ हमेशह इहा ई चाल चली आहे। तव्हां जेकॾहिं नेल्सन मंडेला जी बायोग्राफी खे पढ़ी वठो त कहिड़े तरीक़े सां सालनि ताईं अंग्रेज़ कारनि खे कबीलनि में विरहाए करे उन्हनि खे विढ़ाइण जी कोशिशि कई। उनखे वोट कबीले जे बुनियाद ते, उन जा स्कूल कबीले जे बुनियाद ते, उन जी हॉस्पिटल्स कबीले जे बुनियाद ते, उन जे रिहाइश लाइ जेके घर ठाहिया वेंदा उहे कबीलनि जे बुनियाद ते हूंदा त हिकु कबीलो कंहिं तरीक़े सां ॿिए कबीले सां इंटरेक्शन न करे। जेकॾहिं इंटरेक्शन कंदो त यूनिफिकेशन थींदी ऐं ही क़ौम ठहिण लाइ वेंदी, ऐं जॾहिं क़ौम ठहिण लाइ वेंदी त क़ौमी सवाल उभरंदो। पोइ हर को माण्हू अफ्रीकन थी करे सोचींदो, न कि को खोसो कबीलो, कोसा कि नेल्सन मंडेला बुनियादी तौर ते कोसा कबीले सां तालुक़ु रखंदो। अक्सर मश्किरी में खोसा चवंदा आहिनि त कारा अंग्रेज़ खोसा आहिनि, दैट इज़ नॉट खोसा बट दैट इज़ कोसा। वेल,
सो ये अंग्रेज़ जी पॉलिसी ही जे आख़िर में विढ़ायो। ख़ैर सो आउं नथो सम्झां त असीं ॿ अलॻि मख़लूक आहियूं। भला अलॻि मख़लूक आहियूं त हिन वक़्तु 25 खां 26 करोड़ मुस्लमान कीअं पिया रहनि हिते, या असां सां गॾु हिंदू हिन वक़्तु गॾु कीअं पिया रहनि, अलॻि कीअं थियासीं। We are different creatures. There's nothing in life that joins us together. Next paragraph. After the war came the time for the final settlement, when several more meetings and discussions had failed to bring about agreement. British declared that she was, her word she has been pronounced, she has been used for Britain, British. Why? Because we say motherland, पाण चवंदा आहियूं धरती माँ, उन करे तव्हां it pronoun also can be used, but she also can be used as well for a country. ठीक आहे। सो हिते she word जेको pronoun आहे उहो यूज़ कयो वियो आहे बर्तानिया लाइ। So says she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. So it was decided that English will leave India by 1948. पर हालात बिगड़ी विया फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जे करे, ऐं ॿियो हिते सिविल वॉर जी सूरत हाल पैदा थी वई, यानी हिंदू मुस्लिम तज़ाद बे इंतहा उभरी आयो, ॿिन्ही जे विच में क्लैशिस शुरू थी चुका हुआ। उन जे करे जेको अंग्रेज़ ऑफिसर्स हुआ दे स्टार्टेड टू फील इनसिक्योर इन इंडिया। गवर्नमेंट बुनियादी तौर ते पंहिंजी जेका रिट आहे न उहा विञाए चुकी हुई, छो त कांग्रेस जेका आहे सा जेका मूवमेंट शुरू कई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट मेड कंप्लीटली पैरालाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो Lord Mountbatten, the last viceroy of India, Lord Mountbatten was sent to India as the last viceroy with orders to find a way of handing over the government. This was in March 1947, but already the country was on the verge of civil war. Verge means kinaro, and na वर्ज के एंड जो सिनोनिम समझो वेंदो आहे, नॉट एट ऑल। वर्ज मीन्स किनारो, ब्रिम ऑफ समथिंग, ग्लास जो मथियों किनारो, दिस इज वर्ज। वेल, वर्ज ऑफ सिविल वॉर, द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इन पावरलेस and the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. So here 3 reasons have been discussed. The first one, the country was on the civil war, on the verge of civil war. Second, the government also was divided and British officers were not ready to live in India because they started to feel insecure and they wanted to leave India as soon as possible. Mountbatten quickly decided that India must be divided into 2 states. India must be divided 2 states at once. He announced that the British would leave by August 15, 1947 and hand over their power to the new states of Pakistan and India. That's why, independence, 15th August is celebrated Independence Day in India, and we also should celebrate it. असांखे बि हिनखे 15 अगस्त खे सेलिब्रेट करणु घुरिजे, छो त असांखे 15 अगस्त से अंग्रेज़ खां आज़ादी मिली आहे इंडिया खे। असां आज़ादी जो ॾींहुं करे मल्हाईंदा आहियूं, पर इहो आज़ादी जो ॾींहुं कोन्हे बेसिकली, इहो बुनियादी तौर ते पैदाइश जो ॾींहुं आहे। पाकिस्तान appeared on the map of world on 14th अगस्त, त पोइ उनखे असां इन टर्म सां छो न कयूं, पर ख़ैर इहो बाद जो डिस्कशन आहे। हिते बि ग़लती आहे तारीख़ी तौर ते। The provinces that the Muslims claimed must decide at once whether they wish to join Pakistan or India. So it was in the hands of provinces. They had to decide, and Sindh was the first province to decide that we are going to join Pakistan. पूछा थियो 72 साल में यो कोन था डिस्कस कयूं,
तव्हांजी पंहिंजी हालत ई तव्हांखे ॿुधाईंदी त आया इहो फ़ैसिलो सही हो या ग़लति हो। हिकिड़ी ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त जॾहिं पाकिस्तान में जॉइन थियण जो हिसो थियण जी तव्हां ॻाल्हि कयो था त जेके माण्हू तव्हांखे वठी करे पाकिस्तान जो हिसो थियनि पिया, छा लीगली इहे उन करण जे क़ाबिल हुआ? मिसाल तौरु आऊं अवामी नुमाइंदो ई कोन आहियां ऐं आऊं चवां पाकिस्तान में जॉइन कयो, छा इहो ठहे थो? छा अवामी सपोर्ट उन्हनि माण्हुनि खे हासिलु हुई जिन माण्हुनि वञी पाकिस्तान जो हिसो थिया? थी वियासूं, दैट्स गुड, फाइन, वी डोंट हैव एनी इशू, वी आर रेडी टू लिव हियर, बट एट लीस्ट वी शुड बी रेस्पेक्टेड. लैंग्वेज, कल्चर, इकनॉमिक शुड बी रेस्पेक्टेड. दरियाहनि खे इज़त ॾियो, असांखे इज़त ॾियो, असांजी तहज़ीब कल्चर खे इज़त ॾियो. इन ई लक्षणनि जे करे यू लॉस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान 1971. ठीकु आहे, 71 में साबित थी वियो त टू नेशन थियरी कुझु बि कोन हो, बकवास हुई, फेल थी वई. जेकॾहिं हुई वाक़ई त पोइ तव्हांजो बंगाल जेको ईस्ट पाकिस्तान उहो अॼु बांग्लादेश छो आहे, सोचणु घुरिजे. Whether they wish to join Pakistan or India, there must be no more delay. Congress and Muslim League both agreed to these plans. For Jinnah, it was a great victory. Sindh, the northwest frontier province, Balochistan, West Punjab, Sylhet, East Bengal were included in Pakistan. So these were the majority Muslim areas. This made a smaller state than the League had asked for. Some 40 million Muslims. Ketra? Some 40 million Muslims were left in India, but now at last it could be said the most of Indian Muslims had a homeland of their own. The Qaid led his people through the terrible first year of their history. Writer called this first year 1947 a terrible year. Of course, because of seriousness of this year. The year was very serious because of migration. People were leaving India, they were coming to Pakistan, they had to settle them here. There was no administrative machinery at all here, no doctors, no engineer, no army, no police, murders, no hospitals. Of course, तव्हां हिकु नओं मुल्क ठाहियो पिया, तव्हां वटि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ई न आहे, पोइ तव्हां कीअं शयूं हलाईंदो? इन करे राइटर इन साल खे टेरेबल चवे थो, ऐं नो डाउट इट वॉज अ टेरेबल. When the country was divided, millions of Muslim people crossed the new borders of the state. 6.5 million Muslims have leaving India, and 5.5 million Hindus leaving Pakistan. You don't have to forget the number. केतिरा जेके पाकिस्तान छॾे पे विया ऐं केतिरा जेके इंडिया मां छॾे हेॾां पे आया. So states borders say 6.5 million Muslims and 5.5, almost the same number, leaving Pakistan. The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. Once more, angry crowds murdered and stole and burned. About 500,000 Muslims were killed or carried away as prisoner. हा, जीअं मूं शुरूआत में चयो त अरस्तू चवंदो त अधु जेको सच आहे न उहो पूरे कूड़ खां वधीक ख़तरनाक आहे. हिन जाइ ते चयो पियो वञे त हेतिरा हिंदुनि मुस्लमाननि खे मारियो, पर इहो अधु लिकायो पियो वञे त हेतिरा मुस्लमाननि हिंदुनि खे मारियो. इन सां हिकु कमाल हरकत थिए थी, उहा इहा त यकीन क्लास में वेठल, तव्हांजे क्लास में वेठल जेके हिंदू भाइर आहिनि उहे पंहिंजे पाण खे थोरो अलॻि फील कंदा. ठीकु आहे, ऐं तव्हांजे दिलि में मुमकिना तौर ते हिंदू नफ़रत पैदा थियणु चाहे थी. टेक्स्ट बुक त इहो कमाल कंदा आहिनि, तव्हांजे ज़हन में ख़ामोशी सां जेको ज़हर विझंदा आहिनि उहो हिन तरीक़े सां विधो वेंदो आहे. सो killed or carried away as prisoners, all this killing and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. He begged for peace and friendship with the former enemies. He said, I quote,
Some nations have killed millions of each other, he once said, and yet an enemy of today is a friend of tomorrow. The Qaid was over 70, worn out, tired, thakkal, with his lifetime of his struggle and by his growing illness. The last year of Pakistan was made sad by fate of Kashmir, the K in Pakistan. The news that Hindu Maharaja was taking his Muslim subjects away from Pakistan, the nation to which they certainly wanted to belong, was a fearful blow to him. So right चवे तो आखिर में जिना जी तबीयत घणी न करे बिगड़ी वई यो उनके दुख यो खाई वियो तो पाकिस्तान जी में के शामिल ना है यानी कश्मीर शामिल ना है अच्छा but by now he was too weak and too tired to fight anymore. A dying man, once again he flew to Karachi, but this time there were no crowds to greet him. He had always kept the news of his illness to himself. The night he left his people and they buried him in the heart of city where he was born, in the heart of nation he had made. वींदे वींदे बि कूड़ ॻाल्हायो वियो चयो वियो त कराची में जिथे पैदा थियो जिना उते ई दफ़न कयो वियो सभिनी खे ख़बर आहे त जिना कराची में न पर ठटे में पैदा थियो पर शायदि हिननि खे सिंधी जे हिकिड़े वधीक टुपके जो डपु आहे ठठे में जेकॾहिं तव्हां हिकिड़ो वधीक टुपको हणो त मामिलो ख़राबु थी सघे थो एनीवेज़ थैंक यू वेरी मच